Hello, good morning students and welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next MCQs of the topic applications of definite integration. So this topic applications of definite integration is the most simplest topic of the syllabus MST CET. So we have already taken first 15 MCQs and now we have to start the MCQ number 16. Okay. सो अगर इस टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ को टच करो, लिंक टच करो, देन यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस टॉपिक. इट्स 60 MCQs with the synopsis. Okay, so let's start the MCQ number 16. So look at the MCQ number 16 number. The area under the curve y is equal to line y is equal to 8x up to x axis from x is equal to 2 and x is equal to 4. So these are the two lines. So just we have to integrate this area 2 to 4. This is the lowest term of the x, lowest number of the x, and this is the highest number of x. It means this is the lower limit, this is the upper limit. Integration of 8x. It's very simple. 8x square by 2, that is the integration from 2 to 4. These 2 4s are 8. 4, upper limit 4 square is 16, lower limit 2 square 4, 16 minus 4 is 12, 12 4s are 48. So area is 48 square units. Okay, so हर example इसका within 30 to 40 seconds solve हो सकता है. So answer of 16 is what? C. Let's start the MCQ number 17. In MCQ number 17 we have to find the area bounded between the curve y square is equal to 4x. Y square plus 4x is equal to 0 and the line x plus y is equal to, so y square is equal to minus 4x, equation first. x plus y is equal to 0, हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे इसको. x plus y is equal to 0 means y is equal to minus x, equation second. पैराबोला से कंपेयर करो. 4a is equal to minus 4, so a is equal to minus 1, m is equal to minus 1. So this is the position of m and a. Now हम इसका एरिया फाइंड करना है. सो शॉर्टकट पता है हमारा पैराबोला एंड लाइन का 8a स्क्वायर अपॉन 3a m क्यूब. सो एरिया इज इक्वल टू 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m क्यूब. पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. y is equal to mx is the line. So 8a square by 3m cube. 8a square is 1. 3 minus 1 cube is 1. m cube है यहाँ पर. So 8 by 3 minus 1 का cube minus 1 होता है, but area is always positive. So 8 by 3, that is the area in square units. So answer of 17 is C. Answer of 16 is also C. Okay, now let's study the MCQ number 18. So और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल कैटेगरी के एग्जाम्पल है. सो देखो MCQ नंबर 18 क्या है. द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1. y इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1. ओके, एंड ही हैज़ गिवन द रेंज x is less than or equal to 3, greater than or equal to 1. It means we have to find the area from 1 to 3. 4 outside square root of x minus 1 dx. So 4 times x minus 1 raised to half, x minus 1 raised to 3 by 2 into 2 by 3 from 1 to 3. So it's 8 by 3. 3 minus 1 2. 2 raised to 3 by 2 is 2 root 2. 1 minus 1 0. 0 raised to 3 by 2 is 0. This is the answer. 16 root 2 divided by 3. 16 root 2 divided by 3. 18 का आंसर क्या है देखो, C ऑप्शन है. 18C, 17C, 16BC. So this is the solution of first 3 MCQs of the worksheet. This applications of definite integration. Okay, बहुत ही सिंपल है तीनों भी MCQs. सिर्फ डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन फाइंड किया. यहाँ पर मैंने शॉर्टकट अप्लाई किए. अगर आपको ये शॉर्टकट याद नहीं है, आपको रिमाइंड में नहीं है, सो वी कैन सॉल्व बाय रेगुलर मेथड. दिस इज द पैराबोला, दिस इज द लाइन. ये दोनों को सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करो.
right? You will get the lower limit and upper limit. Then find the area between these two curves, parabola and line. But according to me, the shortcut is very simple and important. Okay, बहुत ही simple है और important भी है because this can be solved within time. 30 to 40 सेकंड में सॉल्व हो सकता है. अगर रेगुलर प्रोसीजर से फाइंड करोगे तो वी हैव टू फाइंड द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, देन इट टेक्स 1.5 minute. Okay, so let's start the MCQ number 19 and 20. Okay, now let's start the MCQ number 19. MCQ number 19 क्या, he has given again parabola x square is equal to 16y x minus 2y is equal to 0, x is equal to 2y. This is the position of 4a. 4a is equal to 16, a is equal to 4. This is the position of m is equal to 2. Shortcut is again same, 8a square divided by 3m cube. Parabola and line. Y is equal to mx or x is equal to my. Y square is equal to 4ax or x square is equal to 4ay are to be same. So here 8a square divided by 3m cube. What is 8a square? 16. 3. What is m cube? 8. 8 cancel. What is answer? 16 divided by 3 in square units. Okay, so don't solve the example by regular procedure. So this is 19. Now let's see the MCQ number 20. 20 नंबर क्या है? अगेन पैराबोला है और लाइन है. सो व्हाट इज पैराबोला? नंबर 20. हियर इज द एग्जांपल नंबर 20. y square is equal to 16x and x is equal to 4. So 8a square by 3. 8a square by 3. So what is a square? 8 into 4 square is 16 divided by 3. So answer is 128 divided by 3. So 128 divided by 3, this is the area of this parabola and line. Okay, so this is parabola 8a square by 3. This is the shortcut for parabola and line. So answer is what? 8 into 4. What is the value of 4a? 4a is 16. So a is equal to what? 4. Okay, so this is the area in square unit, that is 128 by 3. I hope you understand both example we can solve by shortcut. Okay, next. Now let's start the example number 21. So up to 20 or 21. The area of the region bounded by the curve y is equal to x square plus 1 and the lines x is equal to 0, x is equal to what? 3. सो डायरेक्टली इसका ये तो पैराबोला का फॉर्म में, बट ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है. सो वी कांट अप्लाई दैट शॉर्टकट. सो यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. सो एरिया इज इक्वल टू 0 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3. 1 का इंटीग्रेशन एक्स, बिकॉज ऑलरेडी y इज इक्वल टू एम एक्स एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है. फ्रॉम 0 to 3. 27 by 3 9 plus 3 minus 0. So this is 12 is the answer. 12 in square units. Okay, so 21 का आंसर कितना है? 12 है. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको इसको केयरफुली सॉल्व करना है. ही हैज गिवन द फंक्शन दैट इज कर्व, दैट इज पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म. y is equal to f of x. लेफ्ट हैंड साइड y, राइट हैंड साइड f of x. So solve by regular procedure. Now 22. y is equal to cos x. अगर 0 to pi by 2 होता, 0 to pi by 2, the area of this curve is 1 unit, 1 square unit. But he has given 0 to 2 pi.
सो 0 to 2 पाई मीन्स कंप्लीट वन रोटेशन है, राइट। सो 0 to पाई बाई 2 कितना है, 1 है। सो 1 + 1 + 1 + 1, इसका आंसर कितना आएगा, 4। सो एरिया इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अगर आप cos x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 0 to 2 पाई, सो डेफिनेटली यू विल गेट 0 एरिया, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x है, 0 to 2 पाई, sin 2 पाई 0, sin 0 ऑल्सो 0, बट एरिया नेवर निगेट, नेवर 0, एरिया तो 0 नहीं आएगा, बिकॉज दैट कर्व बाउंडेड सम पोर्शन, उसका एरिया 0 कभी भी नहीं आएगा। सो 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 4 टाइम्स करो, 0 to पाई बाई 2 4 टाइम्स, वाई, बिकॉज 0 to 2 पाई है, राइट। सो आंसर इज व्हाट, 4 यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 square units. So this is the area bounded by the curve y is equal to cos x. Okay, so this is the completion of example number 22. Now let's see the 23. So read the example number 23. The area bounded by the curve y square is equal to 4x and x is equal to 1, x is equal to 4. So this is the MCQ number 23. So y square is equal to 4x. So what is y? Y is equal to 2 root x. What are the lines? X is equal to 1 and x is equal to 4. मीन्स इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इट्स 2 root x from 1 to 4 dx. तो आउटसाइड रूट एक्स का इंटीग्रेशन x रेज टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 मीन्स इंटू 2 बाई 3, 2 to 4, 1 to 4, 2 into 2 4, 4 by 3, 4 raised to 3 by 2, 4 into root 4, it is 8, 8 minus 1, 7 4s are 28 by 3. So this is the area. सो जितना स्पीडी कैलकुलेशन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज इसका जो सेव टाइम है उसको हमें इंटीग्रेशन को यूज़ करना है, बिकॉज इंटीग्रेशन में बहुत सारे एग्जांपल 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, बट ऐसे कुछ टॉपिक है जहाँ पर टाइमिंग सेव होता है। सो वो सेव टाइम वी हैव टू अप्लाई, यू हैव टू यूटिलाइज द जो लेंथी न्यूमेरिकल्स है दैट इज इंटीग्रेशन में, सो वहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ 23, 28 by 3। ये बहुत फास्ट करना है। 4 raised to 3 by 2 8, 1 raised to 3 by 2 is 1 upon 3 by 2 means into 2 by 3, y square is equal to 4x means y is equal to 2 root x, right? So y is equal to f of x, that is the proper form to evaluate, to find out the area of curve. Okay, after 23 let's see the 24. 24 is very similar to last, y square is equal to 4x, but limits are different, x is equal to 2, x is equal to 4, so y is equal to 2 root x. So area from 2 to 4, 2 root x dx, ये 2 और ये 4, ये 1 to 4 था, ये 2 to 4 है, so lower limit is 2, upper limit is 4, 2 into x raised to 3 by 2 into 2 by 3 from 2 to 4, it's a 4 by 3, 4 raised to 3 by 2 8, 2 raised to 3 by 2 is 2 root 2, so this is area. 4 raised to 3 by 2, actually raised to 3 by 2 means what, root 4 into 4, 4 into root 4, that is 8, 8 minus 2 root 2. So what is answer of this? 4 by 3, 8 minus 2 root 2. ये 8 कहाँ से आया? 2 to 4. Wait, I will check. 23 का C, 24 का D. चेक करो आंसर। सो ये जो पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। ओके, सो ये दोनों पैराबोला सेम है। यहाँ पर लाइन्स 2 to 4, ये 2 होगी ये लाइन, ये 4 होगी ये लाइन। सो जो भी एरिया फाइंड करना है वो डबल करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। सो इट्स व्हाट 8 by 3, 8 by 3। सो ये भी सेम,
x इज इक्वल टू 1, ये पैराबोला x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, 1 to 4, ये भी एरिया हमें डबल करना पड़ेगा. सो इंटू 2 करो, 56/3 इज द आंसर. यहाँ पर 8/3, 2 into 2 4, so 8/3, यहाँ पर 56/3. ओके, बिकॉज ही डजंट मेंशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया. अबोव द एक्स एक्सिस 23 का अबोव द एक्स एक्सिस था, तो इसको 28/3 रहने दो. अबोव द एक्स एक्सिस, सो अबोव द एक्स एक्सिस मींस वी हैव टू फाइंड ओनली दिस, ये सिर्फ इतना एरिया फाइंड करना है. So this is the geometrical condition which is given. We have to find the area above the x-axis, means only in the first quadrant. So above the x-axis ये भी है, but यहाँ पर area mention नहीं है because सिर्फ ये parabola, standard parabola which is open to the right side. यहाँ पर mention नहीं है above the x-axis or below the x-axis. So we have to multiply double. So this is the different type of example because in the 23 he has clearly mentioned above the x-axis, so no need to multiply 2. But in example 24 he has clearly mentioned only find out the area which is of the curve y square is equal to 4x and the lines x is equal to 2 and x is equal to 4. So 24 का आंसर D है, 23 का आंसर वो as it is C ही है. Okay, so this is the completion of 16 to 24. Okay, we will take more. Now let's see the MCQ number 25. In MCQ number 25, find out the area bounded by the curve. So curve is given what, xy is equal to x plus 4. So x से divide करो, y is equal to 1 plus 4 by x. 1 plus 4 by x. So this is the proper form of function curve y is equal to f of x. What are the lines? X is equal to 1 and x is equal to 4. So integration 1 plus 4 by x dx from 1 to 4. Integration of 1 is x. 1 by x का integration log x from 1 to 4. So 4 plus 4 log x upper limit minus 1 minus log 1 is 0. So this is 0. 4 minus 1 is 3. 3 plus 4 log 4. So this is answer which is in square unit. Okay, 3 plus 4 log 4. So C is the answer. So what is important here? He has given, this is the implicit form, xy is equal to x plus 4. We can convert into explicit form, y is equal to fx. So this is x सिर्फ divide करो, and he has clearly mentioned the limits which are the x is equal to 1 and x is equal to 4. This is the answer. Got it? So what is about 26? MCQ number 26, x square is equal to y minus 3 and y is equal to 4, y is equal to 7. So he has given the ordinates x, y is equal to 4 and y is equal to 7. So ये y axis का कर्व है, y axis का फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है. So इसको स्क्वायर रूट निकालो, x is equal to root y minus 3. So this is what x is equal to root y minus 3. Find out the area. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डबल करने की जरूरत नहीं है. 4 to 7 root y minus 3. So y minus 3
raised to 3 by 2 into 2 by 3 from 4 to 7. 2 by 3. 4 minus 1. 4 minus 7 minus 3. 4. 4 raised to 3 by 2. 8. 4 minus 3. 1. 1 raised to 3 by 2. 1. 7 to the 14. 14 by 3 in square units. Okay. So I hope you understand this solution. This is the example number 26. Okay, 14 by 3 in square units. So let's see the MCQ number 27, 28. And 28. So read the example carefully. 27 and 28. What is example number 27? Find out the area bounded by the curve. Logarithmic function y is equal to log x. So this is a MCQ number 27. Y is equal to log x. The lines are x is equal to e to e and to e. So integration of log x from e to e. So ये log x का into 1 सॉल्व करके सॉल्व करो, x into log x minus x आएगा फ्रॉम e to e. बहुत बार इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया है बाय टेकिंग into 1 एज अ सेकंड फंक्शन, सॉल्व बाय u into v, दैट इज बाय पार्ट्स मेथड. सो दैट इज x into log x minus x, उसका आंसर आता है. सो ये भी आपको जंप करना आना चाहिए. यहाँ पर 2e log 2e log 2e minus 2e, यहाँ पर भी रखना है. e या अपर लिमिट माइनस e log e 1 माइनस e log e 1 होता है. सो ये माइनस e 0. सो 2e कॉमन log 2e माइनस 1. सो इसको आंसर में कन्वर्ट करना है. सो 2e log 2e का मीनिंग क्या होता है? log 2 प्लस log e. log 2 प्लस log e माइनस 1. log e की वैल्यू 1 है. सो 2e इंटू log 2, ये उसका आंसर. 2e इंटू log 2, डी ऑप्शन. सो log 2e का मीनिंग क्या होता है? log e 1 होता है. log 2e भी 1 होता, ऐसा नहीं. log 2 प्लस log e. log 2 प्लस log e. log e कितना है? 1. So what is the answer? log 2. So outside का 2e into log 2, that is the area bounded by the curve log x. Okay. So this is the 27. Look at the 28 now. In 28 here, y square is equal to 16x. y square is equal to 16x and latus rectum. So latus rectum का शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या है? 8a square by 3. 8a square by 3. So ये की वैल्यू 4a 16 है. ये is equal to what? 4. This is the position of 4a. 4a is 16. So ये is equal to 4. 8 into 16 divided by 3. 8 into 16, 128 by 3. So this is the answer of 28, 128 by 3. So area of bounded by the parabola and its latus rectum, that shortcut is 8a square by 3. That parabola is y square is equal to 4ax. We know the latus rectum is what? It is a line which is perpendicular to axis but passing through the focus. So ये सब उसकी geometrical base है, but हम उसको solve करेंगे by using shortcut. Which shortcut is magic shortcut? That is 8a square by 3. Okay. So after completion of 20, we will take more 2 examples after immediate this. Look at the MCQ number 29 and 30. This is the last 2 examples of this today's video lecture. Okay, what is the next is what 29, the area bounded by the curve y is equal to cos x. So ये अभी हुआ example repeated है. So y is equal to cos x है. X is equal to 0, x is equal to 2 pi. So area is what? 4 square units. 4 square units. Alright, so this is the area of sine and cos, both having same area. Example number 30, there is a small correction. In MCQ number 30,
y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। सो वहाँ पर ओनली 4 लिखा है तो वहाँ पर 4x करो, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सो y and x axis, so we consider y is equal to 0. So this implies 4x minus x square is equal to 0. Therefore x into 4 minus x is equal to 0. This gives x is equal to 0 and x is equal to 4. It means we have to find the area of this curve 4x minus x square from 0 to 4. So it is a 4x square by 2 minus x cube by 3 from 0 to 4. ये 2 cancel. 4 square 16. 4 cube 16 by 3. No, 64 by 3. 4 cube 16 4s are minus 0 0. It's a 0. 96 minus 64 divided by 3. It's what? 32 divided by 3, which is in square units. So now part is only calculation. Important, we have to find the coordinates of x. X is equal to 0 and x is equal to 4 by considering y is equal to 0. Why we consider y is equal to 0? Because question is what? We have to find the area of the curve and x axis. So x axis के पास का curve है वो, so that's why we have to consider y is equal to 0. So this is the solution of example number 29 and 30. 30 में एक small correction, there should be x in the curve 4x minus x square. Okay. So this is the completion of next 15 MCQs. हमारा target 15 का ही है because MCQ total 60 है। 15 के 4 वीडियो बनेंगे और एक वीडियो कौन सा है अपना सिनॉप्सिस का। टोटल 5 वीडियोस का ये टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सो डोंट मिस दिस टॉपिक, 1 क्वेश्चन तो श्योर रहेगा। सो 2 मार्क आपको पक्का मिलेंगे। ये 60 MCQs इज अ सफिशिएंट स्टडी फॉर द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द 15 MCQs of today's video lecture, MCQ number 16 to MCQ number 30. Okay, so today I will stop here, and the most important, for more topics and for more update of this, you have to stay tuned on this YouTube channel, Math Mentors. Okay, so today I am going to stop here. Thank you very much.